So guys, we are now starting with the fourth chapter, and that is called as Business Services, and this is the biggest chapter of your syllabus. So guys, what are these business services? Now, any business activity requires a lot of supporting activities, and these supporting activities for conducting the business smoothly is called as business services. So my dear students, to start a business activity, you require huge capital. For smooth functioning of the business, you require money. And for expansion and diversification of the business, again, you require money. And this money, this finance is provided by the first business service, that is called as banking. We will be seeing about banking, but later on. Moving on to the next one is called as insurance. Business involves a lot of risk. अब ये जो रिस्क है, एक होता है प्योर बिजनेस रिस्क, मतलब हमने बिजनेस चालू किया लेकिन कस्टमर आए ही नहीं, कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कस्टमर को हमारा सर्विस अच्छा नहीं लगा और हमको लॉस हुआ, तो भाई इसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता. दैट इज प्योर बिजनेस रिस्क. बट इन बिजनेस इफ देयर आर सम एक्सीडेंटल रिस्क्स, लाइक हमारे गोडाउन में आग लग गया या हमने गुड्स को भेजा और हमारा शिप डूब गया, ऐसा अगर कुछ होता है तो ऐसे बिजनेस रिस्क को हम नलीफाई कर सकते हैं, या ऐसे बिजनेस रिस्क से होने वाले लॉसेस को हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं विद द सर्विस ऑफ इंश्योरेंस. So insurance will be very helpful in minimizing the risk of the business. Then we have something called as transport. We all know something called as place utility. Goods that are grown or manufactured at a particular place are not sold in the same place. They are sold all over different places, maybe in different cities, maybe in different states, maybe in different countries. And that is only possible with the help of transportation. Transportation moves the goods, finished goods, raw materials, people from one place to another. Then moving to the next one is called as warehousing. Now what is this warehousing? Warehousing is also very important. Goods जब बनता है तब immediately consume नहीं होता. There is a time gap, and this time gap is fulfilled by warehousing. So warehousing creates time utility. And the last one is called as communication. Now today communication has become the key. हम लोग जब किसी को कॉल करते हैं तो हेलो नहीं बोलते हैं, कहाँ पे है ऐसा पूछते हैं. ओके, तो कम्युनिकेशन आज इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, एसेंशियल हो गया है एवरीडे लाइफ में कि पूछो मत. और एवरीडे लाइफ में अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो बिजनेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारा प्रोडक्शन शुरू हो गया है और गुड्स कहाँ तक आया है ये हमको पूछना है, तो हम कॉल करके पूछते हैं कहाँ तक आया. हम जीपीएस को यूज करके ट्रैक करते हैं कार या ट्रक की कहाँ तक पहुंच गया है. इन द सेम वे गुड्स जब हमको मार्केट में भेजना है तो हम फिर से कम्युनिकेट करके फाइनल करते हैं कि गुड्स कहाँ तक पहुंच गए. And after that, communication deals with communicating with the consumers, telling them what the new product is all about, taking suggestions from them, what are their likes, dislikes, all such things comes under communication. So these were the different types of business services that we will be learning in this particular chapter. So this was nothing but the introduction of our chapter, Business Services. So let's start with the very first type of business service, and that is called as banking service. Now, as I told you, my dear students, that to start a business, you require money. For smooth functioning of different activities in the business, you require money. For expansion, diversification, in short, the growth of the business, you require money. And this money, this finance is provided by a financial institution called as bank. So, a bank is a financial institution which deals with deposit and advances and other financial related services. So, ये जो बैंक होता है, it works under a act, Indian Banking Regulation Act of 1949. तो बैंक अपने आप में एक बिजनेस है और बैंक पैसे का बिजनेस करती है.
बाकी बिजनेस के लिए पैसा लगता है और बैंक पैसे का बिजनेस करता है। मतलब इट टेक्स मनी फ्रॉम दोज पीपल हु हैव इन अबंडेंस एंड इट गिव्स मनी टू दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ मनी। एंड इन नीड ऑफ मनी का मतलब होता है कि दे ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू पे दैट मनी बैक। So such a type of business is referred to as a banking service। तो जिनसे ये पैसा लेते हैं उनको इंटरेस्ट देते हैं और जिनको ये पैसा देते हैं उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। और ये इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क होता है। हम जो इंटरेस्ट देते हैं वो कम होता है, हम जो इंटरेस्ट लेते हैं वो ज्यादा होता है। एंड दिस डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट द प्रॉफिट फॉर बैंक्स। So this is how basically a bank functions. So now let's try to understand what are the different types of banks. The first and the foremost type of bank is called as the central bank. Normally every country has got such type of a central bank. A central bank is the apex, I mean to say the top, apex financial institution in the banking industry in a specific country. और इंडिया में अगर बात करें तो इट इज द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द बैंकर्स बैंक। अब आप और मेरे जैसा लोग यहां पे अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। Only big banks open their account in such a bank. The different government departments also have account in such a bank. In short, this particular bank controls the functioning of other banks, and that's why it is called as the apex financial institution. Okay, moving to the next one is called as a commercial bank. Now, commercial bank is that bank which undertakes the business of banking purely to make प्रॉफिट्स, इसीलिए तो उसको कमर्शियल बोलते हैं। एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो दिस पर्टिकुलर कमर्शियल बैंक्स आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेसेस। जिनके पास भी पैसा अबंडेंस में है वो बैंक में पैसा रख सकते हैं, इसके बदले में उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। और जिनको पैसे का जरूरत है, okay, maybe for business, maybe for education, maybe for buying a house, maybe for buying a car and whatever, okay, they will borrow money from this bank and against that they will be paying the interest. So इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शन करवाने के लिए जो पैसे का जरूरत पड़ता है, नॉर्मली ये पैसा इकोनॉमी में ऐसे बैंक्स पंप करते हैं, and that's why they're referred to as what? Commercial banks. Now, the different types of commercial banks in India. Number one is called as the public sector bank, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद ये बैंकिंग का बिजनेस करती है। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहाँ पे प्राइवेट बिजनेसमैन एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज अ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक मीन्स फॉरेन बिजनेसमैन एंटर इनटू द फील्ड ऑफ बैंकिंग इन आवर कंट्री। अब ऐसे बैंक्स को हम लोग बोलेंगे फॉरेन बैंक। So all these different types are belonging to something called as commercial banks. Moving to the next one is called as cooperative banks. Now cooperative banks are formed on cooperative principles. That is service before self, helping our members, ये principles पे cooperative bank बनता है। and these banks are registered under the Indian Cooperative Societies Act of 1912। तो cooperative principles पे ये बैंक बनते हैं members को help करने के लिए। अब members को help करते करते ये बाकी सोसाइटी को भी help करते हैं। and such type of banks are regulated by Indian Banking Regulation Act of 1949। Now, these cooperative banks work at different levels. First one at the very village level, उसको हम लोग बोलते हैं the primary credit societies। विलेज में जो भी artisans होते हैं, farmers होते हैं, उनको जो finance का जरूरत होता है, that is fulfilled by the primary credit societies। Then at a district level, the bank is called as the district central cooperative banks। तो जो थोड़े से 2 टायर सिटीज होते हैं, वहां पे जो बिजनेसमैन को जो पैसा लगता है उनके बिजनेस के लिए, एक्सपांशन के लिए, दैट मनी इज प्रोवाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक।
And the last level is called as the state cooperative bank. It is at the state level. So big businessmen can also borrow money from such type of banks. So the state cooperative bank controls the district central cooperative banks, and the district central cooperative bank controls the primary credit societies. So that was called as cooperative banks. Moving to the next one is called as the industrial development banks. As the name is suggesting, these banks help in development of an entire industry. So it is quite obvious this particular bank has to be a bigger one. So these are the financial institutions that provide a medium and a long-term funds to business enterprises. A medium term could be anywhere between 3 to 5 years, and long term is anywhere above 5 years. Such a type of banks are called as industrial development bank. इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, IDBI, the Industrial Development Bank of India. इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो हमने अभी अभी देखा, दैट इज प्रोवाइडिंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, और दूसरा है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स लाती है और उसको जब ऐसा डर होता है कि अपने शेयर्स मार्केट में नहीं बिकेंगे, तो दे एंटर इनटू अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक. तो अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स मतलब बैंक गारंटी देती है कंपनी को कि अगर आपके शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो जितने भी अनसोल्ड शेयर्स है उनको हम खरीद लेगा, मतलब बैंक खरीद लेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. और ये गारंटी के लिए बैंक को कुछ कमीशन देना पड़ता है. So such type of underwriting of shares is undertaken by the Industrial Development Bank. Moving to the next one is called as exchange banks. Now, नाम से ही पता चलता है, exchange bank deals into foreign exchange. Whenever business enter into foreign trade, they have to convert their currency, maybe into foreign currency, और कभी foreign currency आता है, तो that is required to be converted into Indian currency. Such type of conversion of currencies is done by exchange bank. So, exchange bank facilitates foreign exchange transaction, और उसके functions क्या क्या है? Financing foreign trade transaction. Now, in foreign trade, you have to get something called as the letter of credit. ये सब जो काम होता है, ये हमारा exchange bank करता है. दूसरा point तो वही है, issuing the letter of credit. फिर अगर हमको फॉरेन कंट्री में डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट भेजना है, प्रॉफिट्स का पार्ट भेजना है, तो ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स इज अंडरटेकन बाय एक्सचेंज बैंक. सो व्हेन अ ट्रेडिंग एक्टिविटी इज स्पैन्ड ओवर मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल करेंसीज का जब सवाल आता है, तो एक्सचेंज बैंक इज द सॉल्यूशन. Moving to the next type of bank is called as the regional rural bank. Again, the name is suggesting something. गांव का बैंक. Regional rural banks are those which mobilize deposits primarily from rural and semi-urban areas. अब गांव में जब बड़े बड़े बैंक्स नहीं होते, लेकिन गांव वालों के पास भी पैसा होता है, तो उनका ये जो फंड्स है, that can be mobilized to such an area which requires money. So such type of banks collects this particular money or capital from small people, small farmers and artisans. वहाँ से पैसा लेते हैं और जिनको ज़रूरत है उनको pass on करते हैं. And they provide the loans again to the small farmers, agricultural laborers, rural artisans. So in short, a bank which functions purely in the rural area, the bank purely for the people of a rural area is called as regional rural bank. Moving to the next one is called as savings bank. अब कोई भी type of bank could be a savings bank. A bank which encourages the people to have the habit of saving. सेविंग्स के हैबिट को एनकरेज करने वाला जो बैंक होता है उसको बोलते हैं सेविंग्स बैंक. इन शॉर्ट, हर बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है. मतलब आप यहाँ पे एक ही बार पैसा डिपॉजिट करो और जब जरूरत है तभी पैसा निकालो. और इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होता है विड्रॉल्स के ऊपर, ताकि आप ज्यादा पैसा यूटिलाइज ना करें, आप पैसा सेव करें. ये बैंक बोलता है. दैट इज कॉल्ड एज सेविंग्स बैंक. Moving to the next one is called as the investment bank, and this bank provides financial and advisory assistance to their customers.
So when customer wants to invest his money, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में करना चाहिए, शेयर्स में करना चाहिए, लैंड में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, कौन से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, इसका एडवाइस ये इन्वेस्टमेंट बैंक देगा और इसके फॉर्मेलिटीज भी शायद ये इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा. Moving to the next one is called as specialized banks. Now, what exactly are these specialized banks? Specialized banks take up a very special and a specific activity. इनका काम एक स्पेसिफिक सेक्टर को डेवलप करना होता है, and that's why it is called as specialized banks. So these banks provide support for setting up a business in a specific area. तो अगर आप एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो तो आपको एग्जिम बैंक हेल्प करेगी. दैट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक. दे विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोस एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड. देन अगर आप एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, आपका एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो वो डेवलपमेंट के लिए एक बैंक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज SYJC. इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, व्हिच इज बेसिकली द subsidiary of Industrial Development Bank of India. And then the last one of this particular type is called as NABARD. NABARD purely works for rural development. It purely works for agricultural type of businesses. So this bank is a national bank for agriculture and rural development. So my dear students, these were the different types of banks. After learning what are the different types of banks, we are now moving to the next question, that is, what are the different functions of a commercial bank? अब commercial bank वो होता है जो profits के लिए business करता है. अब the functions of commercial banks are divided into two different types of groups, या two different types of functions, the primary function and the secondary function. तो जो भी बेसिक बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द प्राइमरी फंक्शंस, एंड द अदर सपोर्टिव फंक्शंस कम अंडर सेकेंडरी फंक्शंस. तो बेसिकली हर एक बंदा जो बैंकिंग में काम करता है या जो बैंक में अपना काम पूरा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन. सो नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्राइमरी फंक्शंस. So these primary functions are also known as the core banking functions, the main part of the banking which is used by almost all the people. So let's begin with the two types of primary function. The first one is called as accepting deposits. अब accepting deposits मतलब बैंक आपसे पैसा accept करेगा, आपसे पैसा लेगा. The commercial bank collects deposits from individuals and organizations in the form of time deposit and demand deposit. In short, जिनके भी पास पैसा है, ये पैसा वो लोग बैंक में रखते हैं, मतलब बैंक इनसे पैसा लेता है. अब इसका दो फॉर्मेट है. एक होता है टाइम डिपॉजिट, दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक आपसे पैसा लेगा, बीच में पैसा मांगने का नहीं बैंक के पास, एंड टाइम पूरा होने के बाद बैंक विल रिटर्न दिस मनी अलोंग विथ इंटरेस्ट. दैट इज कॉल्ड एज टाइम डिपॉजिट. The other one is called as the demand deposit. अब डिमांड डिपॉजिट मतलब हमने बैंक के पास पैसा रखा, राइट? तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है. हमें जब पैसे का जरूरत पड़ेगा तो भाई हम पैसा निकालेंगे और बैंक को ये पैसा देना पड़ेगा. That means whenever the bank gives us the money when we demand is called as demand deposit. अब इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो कम इंटरेस्ट देगा. So when we talk about time deposits, there are two different types of time deposits, that is called as the fixed deposit and the recurring deposit. A fixed deposit मतलब एक साथ लमसम पैसा भरो, and after a fixed period of time, maybe 6 months, 1 year, 2 year, 3 year, 5 years, bank will return the money along with
interest, that is called as fixed deposit. और दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। यहां पे हम लोग एक स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ भरते रहेंगे, एवरी मंथ भरते रहो फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। दैट कुड बी मे बी 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, and at the end of this particular period bank will return all the money along with interest. That is called as recurring deposit. Then moving to the next one is called as demand deposit. अब डिमांड डिपॉजिट में मैंने क्या बोला था? डिमांड डिपॉजिट मतलब हम बैंक में जब भी चाहिए तब पैसा भरेंगे और जब हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा तो हम बैंक में से निकाल लेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलराइड पर्सन है तो वो क्या करता है, उसका सैलरी होता है और वो बैंक में सैलरी डिपॉजिट कर देता है एक साथ, राइट? एंड जब उसको जरूरत पड़ेगा घर खर्चे के लिए या किसी रीजन के लिए, वो धीरे धीरे बैंक से पैसा निकालता रहेगा। उसको हम लोग बोलते हैं सेविंग्स अकाउंट। Then the next one is called as the current account. Now this is a very special type of account and normally such type of current account is used by businessmen. अब बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत आता है और इसका पैसा बहुत खर्चा भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर्स आते रहेंगे, शॉपिंग करते रहेंगे और इनके पास पैसा देते रहेंगे, तो ये पूरा पैसा बैंक में जमा करेगा। पैसा आता है बैंक में जमा करता है, पैसा आता है बैंक में जमा करता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सप्लायर्स आए पैसा मांगने के लिए, तो ये बैंक में से पैसा निकल के सप्लायर्स को पैसा दे देगा या डायरेक्टली उनको चेक दे देगा। सो हियर देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट्स एंड द नंबर ऑफ विड्रॉल्स। बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि भाई आप पैसे का टेंशन मत लो, पैसा संभालने का टेंशन मत लो, हम आपका पैसा संभालेंगे। और इसीलिए करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और कभी कभी करंट अकाउंट के ऊपर आप आपके बैलेंस से ज्यादा पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं और उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ये फैसिलिटी बैंक आपको देता है। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, that is called as time deposits and demand deposits. Okay, moving to the next one is called as granting loans and advances. अब जिन लोगों को पैसे का जरूरत है, people who require money, they will approach the bank for loans. Maybe you want to buy a new house, you want to start a new business, you want to buy a car. आपको फर्दर एजुकेशन के लिए पैसे का जरूरत पड़ता है, कोई भी रीजन हो, अगर आप ये पैसा लौटा सकते हो तो आपको बैंक के पास जाना चाहिए, बैंक को कन्विंस करना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना चाहिए एंड देन यू कैन गेट लोन्स फ्रॉम द बैंक। तो बैंक जब लोगों को पैसा देती है, दैट इज रेफर्ड टू एज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सो बैंक ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स who are in need of funds. Who are in need of funds मतलब उनको पैसे का जरूरत है, प्लस वो लोग ये पैसा आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न भी करेंगे। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज लोन्स। सो बैंक प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसमैन एंड टू अदर्स। नाउ दिस लोन आर एज फॉलोज। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स वो होता है जो अप टू 1 year तक आप यूज कर सकता है। तो एक साल में अगर आप पैसा लौटाने वाले हो तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, एंड बिकॉज द पीरियड इज लेस, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो लेस। Moving to the next type of loan is called as medium term loan. अब medium term loan में आपका जरूरत 1 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है। So if your requirement is from 1 to 5 years, ranging from 1 to 5 years, then that loans will be called as medium term loan. Obviously, इसका rate of interest थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। And then the last type of loan is called as long term loans, जहां पे आपका जरूरत 5 साल या उससे ज्यादा है। That's a very long period of time. And such a type of loan is called as long term loan, and obvious इसका rate of interest और ज्यादा रहेगा। Then moving to the next one is called as advances. अब advances मतलब एक type of loan ही होता है, but it is for a very short period of time. So advances are small term funds provided to the businessman. ये businessman लोगों को मिलता है। Now what are the different types? The first one in this is called as cash credit. Cash credit मतलब एक specific amount approve होता है
ये आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो पूरा का पूरा, इसलिए पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट नहीं भरते हो, आप जस्ट एक अप्रूवल लेके रखते हो और उसके बाद जितना जरूरत पड़ेगा उतना वो अप्रूव्ड लिमिट में से आप यूज करोगे और जितने टाइम के लिए आप यूज करोगे उतना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, आपके पास पैसा आ गया, आप फिर से ये पैसा बैंक में भर दो। इसका कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं होता कि एक बार अगर आपने 1 साल के लिए लिया तो आपको 1 साल यूटिलाइज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैंने आज बैंक में से कैश क्रेडिट का फैसिलिटी उठाया और हफ्ते भर में मेरे पास फिर से पैसा आ गया, तो ये पैसा मैं फिर से बैंक में भर दूंगा। मैंने सिर्फ 7 दिन पैसा यूज किया एंड दैट्स व्हाई आई विल बी पेइंग इंटरेस्ट ओनली ऑन 7 days। सो दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन। अप्रूवल लेके रखो तो कोई टेंशन नहीं है और उतने अप्रूव्ड लिमिट में से जितना पैसा चाहिए उतना निकालो। जब भी आपके पास पैसा आए पैसा भर दो और जितने टाइम के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए आपने पैसा यूज किया, सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड के लिए आपको इंटरेस्ट लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज कैश क्रेडिट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। नौ बिजनेस में ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन फिर भी सप्लायर सामने खड़ा है और उसको हमको पैसा देना है। तो whenever you are withdrawing the amount which is more than the balance available in your bank, तो वो जो ऊपर का एक्स्ट्रा अमाउंट आप जो विड्रॉ करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो बैंक आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। ये सिर्फ मिलता है करंट अकाउंट के ऊपर और ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करता है उसके ऊपर आपको ऑफ कोर्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट। And the last one is called as discounting the bill of exchange। अब discounting the bill of exchange मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि we are supposed to give credit to the customers, राइट लेकिन हमको अभी पैसे का जरूरत है तो हम क्या करेंगे? हम कस्टमर को तो बोल नहीं सकते भाई पैसा इमीडिएटली दे, हमने तो उसको क्रेडिट दिया हुआ है। सो वी कैन गो टू द बैंक एंड टेल द बैंक दैट दिस इज द मनी दैट आई एम सपोज्ड टू रिसीव बट आफ्टर 2 months, so better give me money right now and then whenever the customer will pay, so we will ask the customer to directly pay to the bank। so बैंक अपने को पैसा देती है और बैंक अपना पैसा अपने कस्टमर से लेती है and that is called as discounting the bill of exchange। अब आप बोलेंगे इसमें बैंक का फायदा क्या है? बैंक will be charging a small amount जो पैसा निकालता है। अगर मुझे कस्टमर से 100 रुपया आना है तो मैं बोलता हूं बैंक को कि कस्टमर से पैसा आना है लेकिन 2 महीने बाद, आप मुझे प्लीज अभी पैसा दे दो। तो बैंक बोलेगी कितना पैसा आना है? मैं बोलूंगा 100 रुपया। तो बैंक बोलेगी हम आपको 100 रुपया नहीं देंगे, हम आपको 99, 98, 95 व्हाटएवर, तो उतना पैसा काट के मुझे देगी एंड दैट काटा हुआ जो चीज है दैट इज द प्रॉफिट फॉर द बैंक। So these were called as the primary functions of banking, the main functions of banking. Moving to the next one is called as the secondary functions of banks. So now secondary functions are supportive functions as I told you. So secondary functions of commercial banks are classified as agency function एंड यूटिलिटी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन मतलब बैंक बन जाता है हमारा एजेंट, हमारा मतलब कस्टमर ऑफ द बैंक। ओके, उनका बैंक एजेंट बन जाता है और कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस करता है, ऑफ कोर्स व्हेन दे आर ऑथराइज्ड बाय द कस्टमर, एंड सच अ टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज एजेंसी फंक्शंस। So now let's try to throw some more light on these agency functions. The first one in this is called as periodic collection and payments। अब periodic collection में ऐसा होगा कि हमने कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, हमारा डिविडेंड आने वाला होगा या डिबेंचर्स के ऊपर कुछ इंटरेस्ट आने वाला होगा, तो ये जो पैसा कलेक्ट करने का काम है बैंक विल डू ऑन आवर बिहाफ, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक कलेक्शन। Then we have something called as periodic payments। हम कुछ पेमेंट्स रेगुलरली करते होंगे, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते होंगे या रेंट या लाइट बिल वगैरह ऐसा कुछ रेगुलरली पे करते हैं। सो दैट पेमेंट्स विल बी मेड ऑन आवर बिहाफ एंड दैट इज रेफर्ड टू एज पीरियोडिक पेमेंट्स। Moving to the next one is called as portfolio management। A portfolio management मतलब बैंक will help you to maintain your portfolio। अब maintain your portfolio मतलब आपका जो investments है वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे,
कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करोगे, कहां पे इन्वेस्ट करोगे, ये आपका जो पैसे का इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो एक्सपर्ट financial people, I mean to say financial experts, okay, they are employed by the bank and these people will help us to make our investment decisions, and all such type of things comes under portfolio management. Moving to the next one is called as funds transfer. हम बहुत सारे लोगों को पैसा भेजते हैं, पैसा देते हैं. So bank will be transferring the money from one account to another account. That means we are transferring money from one account to another account. This transfer is referred to as fund transfer. And now it is not necessary कि एक ही बैंक में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा. एक बैंक के एक अकाउंट में से दूसरे बैंक में भी जा सकता है. That is called as funds transfer. Then we have something called as dematerialization. अब आजकल जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के शेयर्स परचेस करते हैं, तो पुराने जमाने जैसा शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता. ऑल दिस शेयर्स are deposited in something called as depositories. CDSL, NSDL ऐसे दो depositories है. इनके पास ये shares deposit होते हैं. जैसे हमारा पैसा बैंक में होता है, तो हमारे पास पैसा है क्या? नहीं. But still हमारे पास पैसा है, वो बैंक में है. ठीक उसी तरीके से हम जब कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो हमारे पास कोई शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास शेयर्स नहीं है. हमारे पास शेयर्स तो है, बट ये इंटेंजिबल फॉर्मेट में है. और ये जो इंटेंजिबल फॉर्मेट वाले जो शेयर्स है वो एक डीमैट अकाउंट में होता है. ये जो सर्विस है दैट इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन सर्विस व्हिच इज गिवन बाय द बैंक्स अंडर एजेंसी फंक्शन. और हमारे बिहाफ पे बैंक शेयर्स को खरीदेगा भी और बेचेगा भी. And then the last one in this is called as forex transaction. So whenever we are entering into any type of foreign trade, import है, export है, होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है, फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, ऐसा अगर कुछ अपना काम है, then that will be handled by forex transactions. So these were the different types of agency functions. Moving to the next one is called as the utility functions. मतलब बैंक आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेगा, आपके काम आएगा. तो इसमें सबसे पहला होता है द इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक. बहुत जगहों पे आपका चेक एक्सेप्ट नहीं होता. वो लोग बोलते हैं कि हमको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए. डिमांड ड्राफ्ट इज ए गारंटी कि ये कभी भी बाउंस होगा नहीं. सो हम बैंक में जाएंगे, हम बैंक के पास पैसा देंगे और बैंक को बोलेंगे कि हमको डिमांड ड्राफ्ट दो, एंड दिस डिमांड ड्राफ्ट हम लोग पार्टी को देगा. अब ये डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी पैसा भर चुके हैं. That's why this demand draft are very secured, and issuing such type of drafts is referred to as the first point, issue of drafts. बैंक हमको चेक बुक देती है, ये चेक्स हम दूसरे को इश्यू करते हैं. That is called as a checkbook service. Next point is called as a locker facility. Now, if you have some valuables and you feel that these valuables अगर हम घर पे रखेंगे तो it is a lot of risk. So no problem, bank will help you. Bank provides you with locker facilities. यहाँ पे आप आपका गोल्ड, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके शेयर सर्टिफिकेट्स, कुछ भी वैल्यूएबल चीज अगर आपके पास है और आपको लगता है घर पे रखना ये रिस्की है, तो you can deposit in your own locker which is in the bank. So bank provides you with locker facilities. अलग अलग साइजेस का लॉकर होता है और वो हिसाब से लॉकर्स का रेंट होता है. Then moving ahead is called as project reports. If you're starting some business activity, then उसका एक feasibility study, feasibility report बनना होता है. तो ये बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा, ये हमको लोगों को प्रूव करना है, इन्वेस्टर्स को प्रूव करना है. तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बैंक हमको हेल्प करेगा. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज गिफ्ट चेक. गिफ्ट चेक मतलब आप किसी सेलिब्रेशन में जाते हो और आपको किसी को पैसा गिफ्ट करना है, तो हम थोड़ी कैश गिफ्ट करेंगे. सो हम लोग गिफ्ट चेक देते हैं. दीज गिफ्ट चेक्स आर प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. मैंने आपको अभी अभी बोला था व्हाट आर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. जब कोई कंपनी मार्केट में शेयर्स लाती है तो उसको ऐसा डर है कि शायद ये शेयर्स फुल नहीं बिकेंगे, तो बैंक गिव्स देम अ गारंटी कि आपके जो भी शेयर्स मार्केट में नहीं बिकेंगे, जितने भी शेयर्स मार्केट में नहीं बिकेंगे, वी विल परचेस देम. दैट गारंटी इज कॉल्ड एज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स. इसके लिए बैंक कमीशन चार्ज करेगी.
And the last one is called as the gold related services. अब आप बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हो, गोल्ड के अगेंस्ट आपको कुछ सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, एंड ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स कम्स अंडर gold related services. So these are the various functions of banks. Okay guys, now let's try to understand something called as e-banking services. Basically, e-banking stands for electronic banking. Now, whatever are the traditional banking services can be done with the help of internet and with the help of computers. So, when banking services are conducted electronically, it is called as e-banking. So, what are the various e-banking services? The first and the foremost in this one is called as ATM. That is also referred to as Automated Teller Machine. अब ये जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, यहाँ पे टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, 24/7 चालू होता है. जब भी आपको पैसे का जरूरत पड़े, यू एंटर इनटू द एटीएम केबिन, आप आपका कार्ड वहां पे पंच करो, आपका पासवर्ड या पिन डालो और आपको जितने पैसे चाहिए, ऑफ कोर्स उतने आपके अकाउंट में होने चाहिए, उतने पैसे निकाल लो. So automated teller machines are operated by the consumer or by the customer themselves, okay, on his own to withdraw and deposit money. आजकल ये ATM machines में आप पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो. बाकी सब छोटे छोटे काम लाइक knowing your balance, knowing the last 10 transactions, changing the pin of your ATM, payment of utility bills, all such type of things you can do through automated teller machine. Okay, moving to the next one is called as a credit card. Now, credit card basically is a convenience or a provision given by the bank. Bank आपको एक कार्ड देती है और उस कार्ड का एक लिमिट होता है, which ranges from 50,000 to maybe 10 lakh, 20 lakh, depends upon the type of customer and the type of the bank. Now, you can use this card for shopping. आप shopping करो, आपका कार्ड स्वाइप करो या डिप करो, और वेंडर को पेमेंट बैंक देती है. एंड एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पेमेंट साइकिल, जो महीने का होता है, 45 डेज का होता है, ये सब जो आपने शॉपिंग किया उसका एक बिल बनता है और बिल आप वन स्ट्रोक पे करते हो टू द बैंक. So this is called as a credit card because bank gives you a credit of 30 to 45 days. So credit card offers convenience to the customers as they need not carry any cash. आपको कोई कैश कैरी करने का जरूरत नहीं है. आपको जो भी पेमेंट करना है आप क्रेडिट कार्ड से कर दो. Okay, moving to the next one is called as debit card. Now again it is like a credit card only. आपको कैश कैरी करने का जरूरत नहीं है. आप कार्ड स्वाइप करो, डिप करो और पेमेंट कर दो. The difference is क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक भरता है, whereas in डेबिट कार्ड पैसा तो बैंक ही भरता है लेकिन वो इमीडिएटली आपके अकाउंट से डेबिट होगा. मतलब आपके अकाउंट में से पैसा जाता है, बैंक आपको कोई क्रेडिट नहीं देता. That's why it is referred to as a debit card. Then moving to the next one is called as RTGS, that is real time gross settlement. It is a type of a fund transfer system. एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, एक बैंक से दूसरे बैंक जब आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, it is done by RTGS. अब RTGS में कस्टमर्स जो आते हैं बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, उनका एक बैच बनता है एंड एट अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स ये पूरे बैच का प्रोसेसिंग एक साथ होता है और उसको हम लोग बोलते हैं आरटीजीएस. सो फॉर स्मॉल अमाउंट्स यू कुड बी डूइंग आरटीजीएस. The next one is called as NEFT, that is National Electronic Fund Transfer. This is also a method of transferring money online from one bank to another bank. अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि एनईएफटी में जैसे आप बैंक में जाते हो, इमीडिएटली आपका ट्रांजैक्शन अलग से एग्जीक्यूट किया जाता है. देयर आर नो बैचेस मेड. सो एनईएफटी इज फास्टर, एनईएफटी इज quick. That is called as the money transfer system, RTGS and NEFT. लेकिन दोनों के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा.
And the last one is called as net banking or mobile banking. So when you undertake your banking transactions on your own using your desktop computer with the help of internet connection, it is called as net banking. और यही बैंकिंग ऑपरेशंस जब आप आपके सेल फोन से करते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इज कॉल्ड एज मोबाइल बैंकिंग. सो net banking client is able to transact his banking operations, and mobile banking refers to the use of banking service with the help of cell phones or mobile phones. So these are the new developments in the field of banking, and they are called as e-banking services. Okay guys, after finishing off with banking services, we are now moving to the next type of business service, that is called as insurance. Now what do we understand by insurance? Now in business there could be risk. अब प्योर बिजनेस रिस्क अगर है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सीडेंटल रिस्क होते हैं तो हम ये रिस्क को, इससे होने वाले लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम इनटू एक्सपोर्ट बिजनेस और मुझे कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, दे आर गोइंग बाय शिप. तो शिप जब तक वहां पे नहीं पहुंचती तब तक मुझे टेंशन होगा कि शिप पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, शिप डूबेगी तो नहीं, और इसकी वजह से मैं मेरे काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूं. Because there could be a loss. So what I can do is I can insure my goods. एक बार मैंने इंश्योरेंस कर दिया तो शिप अगर वहां पे पहुंच गया तो सुपर, और अगर शिप डूब गया, मेरे गुड्स डूब गए, तो नो प्रॉब्लम, जितना भी मेरा नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे भर के देगा. So they will be compensating the losses. So under such circumstances I have to pay an amount that is called as premium. मतलब मुझे इंश्योरेंस खरीदना होता है. I as a businessman purchase insurance policy against the payment of a premium, and if at all there is any loss, the insurance company will compensate the losses. और इससे मेरा जो रिस्क है लॉस का, वो जो टेंशन है, वो मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ, and I can concentrate on my work. Such a type of service of covering the risk, yeah, compensating for the losses, is called as insurance. So insurance means protection from financial loss. Now guys, before we understand what are the different types of insurances, we need to understand some basic terms that are used in insurance field. तो इसमें सबसे पहला है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड मतलब वो बंदा जो इंश्योरेंस खरीदता है अपने लाइफ के ऊपर, अपने गुड्स के लिए, अगेंस्ट फायर या अगेंस्ट मरीन ट्रांसपोर्टेशन, इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड. इंश्योर्ड का मतलब होता है द पर्सन हु बाइज द पॉलिसी, हु बाइज इंश्योरेंस. इसी को हम लोग पॉलिसी होल्डर भी बोलते हैं. और लाइफ इंश्योरेंस में यही इंश्योर्ड को हम एश्योर्ड बोलते हैं, क्योंकि लाइफ में डेथ होना तो कंफर्म है. देन द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंश्योरर. So the person or a company who sells insurance, who gives the service of insurance, या जो गारंटी देता है कि अगर आपको लॉस होगा तो हम कॉम्पनसेट करेंगे, they are referred to as insurer. So insurer is a firm or a person who compensate for the losses. और अगर ये लाइफ इंश्योरेंस है तो हम उसको बोलते हैं एश्योरर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में डेथ होना तो कंफर्म है. Moving to the next one is called as premium. So premium is nothing but a amount which is paid by the insured to the insurer. हम अगर इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसका फीस हमको देना पड़ेगा. That fees can be called as premium. Okay, moving to the next one is called as policy. Now what do we understand by the term policy? Policy basically is a contract between the insured and the insurer. तो this contains the terms and conditions कि इसमें गुड्स कौन से होंगे, क्या अमाउंट के गुड्स है, ये इंश्योरेंस कब तक है, कौन से टाइप का इंश्योरेंस है, प्रीमियम कैसे भरना है, कब भरना है, कितना भरना है. All such type of terms and conditions are recorded in this contract, are written in this contract, and that is called as policy. Guys, moving to the next one is called as claim.
अगर समझो कोई अनडिजायरेबल इवेंट हो ही जाता है, जैसे आग लग गया, गुड्स डूब गए, गुड्स जल गए, ऐसा कोई भी अनडिजायरेबल इवेंट अगर होता है तो इंश्योर्ड डिमांड्स कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इंश्योरर. This demand for compensation is called as claim. Okay, after the claim, moving to the next one is called as proposal. Proposal means to ask. So when a person wants insurance, he gives a written request to the insurance company that saying that he wants to buy insurance. That proposal or that written request can be called as proposal. And last but not the least is called as subject matter. जिस चीज के ऊपर हम इंश्योरेंस खरीदते हैं या जिस चीज का हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर. सो इट रिफर्स टू एनी एंटिटी, प्रॉपर्टी, गुड्स, लाइफ ऑन विच इंश्योरेंस इज बॉट, एंड दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर. तो बिफोर वी एंटर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, we need to understand these terms very properly because the same terms will be used again and again, and that is called as the basic terms or concepts of insurance. Okay, we are now moving to the different principles of insurance. By insurance is based on certain principles. ये चीजों को हमको इंश्योरेंस में फॉलो करना है. एज अ इंश्योर्ड मुझे फॉलो करना है, दैट इज एज अ कस्टमर मुझे फॉलो करना है, एंड एज इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु डज द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, उनको भी कुछ टर्म्स को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, एंड दे आर रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. So the first one in this is called as the principle of utmost good faith. Utmost good faith का मतलब होता है both parties, the insured and the insurer, should have trust, confidence and faith on each other, and that's why they should give each and every details, realistic details, minute details about the subject matter and about the policy. मतलब the person who buys insurance has to give every minute details about the subject matter, and the insurance company has to give all the details about the terms and conditions of the insurance policy. So here both insured and the insurer provide clear and correct information regarding the subject matter and the policy to each other. एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना. Okay, moving to the next one is called as the principle of insurable interest. A principle of insurable interest ये बोलता है कि आप सिर्फ उसी चीज का इंश्योरेंस निकाल सकते हो जिसमें आपका कुछ फिनेंशियल इंटरेस्ट हो. भाई अगर किसी चीज में मुझे फिनेंशियल इंटरेस्ट है ही नहीं तो उसके ऊपर मैं इंश्योरेंस निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई संबंध ही नहीं है. मैं बाजू वाले के कार का इंश्योरेंस क्यों निकालूं? नहीं निकालूंगा मैं, राइट? अगर मेरी कार है तो मुझे डर है कि मेरा नुकसान होगा और इसीलिए मैं इंश्योरेंस खरीद सकता हूं. बाजू वाले के कार पे मैंने पैसा नहीं डाला है तो उसके कार को अगर आग भी लगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो व्हाई विल आई टेक इंश्योरेंस ऑन दैट प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट ओन्ड बाय मी? And that's why the principle of insurable interest says that you need to have certain financial interest in the subject matter at the time of taking the policy and at the time of undesirable event. और लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो सबको होता है, सबको अपने लाइफ में इंटरेस्ट होता है. Okay, moving to the next one is called as the principle of indemnity. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एक गारंटी है, एक एश्योरेंस है which is given by the insurer to the insured कि अगर आपका नुकसान होगा तो हम आपका नुकसान भर देंगे. That is called as they will compensate for the losses. A guarantee or assurance to compensate the insured. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये भी बोलता है कि we will place you there where you were before occurrence of a undesirable event. मतलब कोई भी अनडिजायरेबल इवेंट के पहले जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन था वही फाइनेंशियल पोजीशन पे हम आपको लाके रखेंगे. दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी.
तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में जितना लॉस होता है उतना ही आपको पैसा मिलेगा, आपके लॉस से ज्यादा आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस इज नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, इट इज जस्ट फॉर द रिकवरी ऑफ द लॉसेस, एंड दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। जब किसी का लाइफ जाता है तो कितना लॉस हुआ ये हम मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लाइफ इंश्योरेंस। Okay guys, moving to the next one is called as the principle of subrogation. Now what is the principle of subrogation? Principle of subrogation ये बोलता है कि जब कोई भी प्रॉपर्टी पे आग लगता है या कोई अनडिजायरेबल इवेंट होता है और अगर आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है तो जो भी बचा हुआ प्रॉपर्टी, जो भी बचा हुआ है, इसका पूरा ओनरशिप विल गो टू द इंश्योरेंस कंपनी। देखो, अगर आपको पूरा कॉम्पनसेशन मिला मतलब आपका लॉस रिकवर हुआ, तो जो कुछ भी बचा है उसका ओनरशिप अगर इंश्योरेंस कंपनी को नहीं गया और वो आपके पास ही अगर रहा तो आपको इसमें से प्रॉफिट हो सकता है। और इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, इंश्योरेंस खाली रिकवरी ऑफ लॉस के लिए होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बोलता है कि अगर आपको पूरा कॉम्पनसेशन मिला है तो जो भी बचेगा उसका ओनरशिप इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। Moving to the next one is called as the principle of contribution. Principle of contribution मतलब when a person buys insurance from multiple companies और अगर कुछ लॉस होता है तो वो मल्टीपल कंपनीज लॉस को कॉम्पनसेट करेंगे बट ऑन शेयरिंग बेसिस, मतलब सब कंपनीज मिलके आपके लॉस को कॉम्पनसेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। Moving to the next one is called as the principle of mitigation of loss. Principle of mitigation of loss ये बोलता है कि जब आपको पता है कि एक अनडिजायरेबल इवेंट हुआ है तो you should put efforts to minimize the risk। मतलब अगर हमने फायर इंश्योरेंस लिया है और अगर हमारे गुड्स को आग लग गई तो हम बैठ के तमाशा नहीं देखेंगे, अरे मेरा तो इंश्योरेंस है, मेरा क्या लॉस हो सकता है। नो, you should call the fire brigade, you should put in the efforts to extinguish that fire. So principle of mitigation of loss says according to this principle it is responsibility of the insured to protect the property and try to minimize the loss if any. And then the last one is called as the principle of quasi proxima. Principle of quasi proxima ये बोलता है कि जब भी कोई अनडिजायरेबल इवेंट होता है तो what was the nearest cause of that undesirable event, and if that cause is in the clause of your insurance policy then the compensation will be given. So the nearest cause for loss is to be taken into consideration while deciding the liability of the insurer. Deciding the liability of the insurer का मतलब होता है what would be the compensation amount that is to be paid to the insured. So these were the 7 different principles of insurance, and on these principles the insurance business is done. So guys, now let's begin with what are the different types of insurances. The first and the foremost type of insurance is called as life insurance. आपके लाइफ के ऊपर जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो it is called as life insurance. But what exactly it is? So life insurance is a contract. अब अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो देयर हैज टू बी 2 or more parties. So here the 2 parties are the insured and the insurer. Insured वो होता है जो अपने लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है और इंश्योरर होता है द इंश्योरेंस कंपनी. So life insurance is a contract between the insured and the insurer, where insurer agrees to compensate a certain sum. मतलब यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको भरोसा दिलाती है कि अगर कुछ हो गया तो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, एक स्पेसिफिक सम आपको देंगे मतलब किसको देंगे? टू द इंश्योर्ड. कब देंगे? ऑन एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी और ऑन डेथ, विच एवर इज अर्लियर.
तो अगर आपने इंश्योरेंस खरीदा एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए और वो टाइम लिमिट खत्म हो गया, तो हम बोलते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी हैज एक्सपायर्ड, या हम लोग बोलेंगे द टाइम हैज फिनिश्ड। तो आपको वो पूरा अमाउंट लमसम मिल जाएगा। एंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, अगर बंदे का ही एक्सपायरी हो गया, मतलब इफ देयर इज डेथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, देन ऑल्सो कॉम्पनसेशन इज गिवन टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिसी होल्डर. So in this way, we can insure our life. That means we can support our family members after the death of that particular person. That is called as life insurance. So moving to the different types of life insurance policy. The first one in this is called as the whole life policy. Now whole life policy मतलब पूरे लाइफ तक इसका प्रीमियम भरते रहो. Of course इसका प्रीमियम कम होगा, आपको मरते दम तक ये प्रीमियम भरना है. And after the death of the policy holder, a lump sum amount is given to their legal representatives, to their family members. So this is to take care of the family even after the death of a person. Moving to the next one is called as endowment policy. Endowment policy में भी आपको प्रीमियम रेगुलरली भरना है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. अब वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जब खत्म हो जाता है तो आपको भरा हुआ पैसा वापस मिल जाता है along with the bonus. And suppose if before the expiry of the term, अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया तो डबल बेनिफिट के साथ उसके घर वालों को कॉम्पनसेशन मिलेगा. Moving to the next one is called as term insurance. So term insurance is a pure insurance. मतलब every year आप प्रीमियम भरते रहो और वो स्पेसिफिक टर्म तक अगर वो पॉलिसी होल्डर का डेथ हुआ तो एक ह्यूज अमाउंट उसके घर वालों को मिलेगा. लेकिन अगर वो स्पेसिफिक टर्म तक पॉलिसी होल्डर का डेथ नहीं हुआ तो हमने जितना भी पैसा भरा है वो हमको वापस नहीं मिलेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा. तो इन टर्म इंश्योरेंस में वैसे भी प्रीमियम का अमाउंट छोटा होता है और जो कॉम्पनसेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. So term insurance is the policy amount is paid in case of untimely death with the insurance policy duration. मतलब पॉलिसी के ड्यूरेशन के टाइम अगर कुछ हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, आपको मतलब आपके घर वालों को. Next is called as annuity policy. Now in annuity policy what happens is आप एक ही बार में प्रीमियम भर देते हो. You pay the premium once and that is lump sum. एकदम बहुत बड़ा अमाउंट आप भर देते हो और उसके बाद आपको रेगुलर टाइम इंटरवल्स में पैसा मिलता रहेगा. सो इट्स लाइक अ पेंशन टाइप ऑफ अ थिंग. एक बार पैसा भर दो और हर महीना आपको पैसा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा टिल द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर. दैट इज कॉल्ड एज एन्युटी पॉलिसी. Moving to the next type of policy is called as money back policy. अब money back policy में आपको रेगुलर प्रीमियम तो भरना ही है, लेकिन जो पैसा आपको वापस मिलता है that is not at the end of the expiry of the policy. Money back policy will be providing you a regular percentage of the sum assured during the life of the policy and also guarantees full payment. Then the next one is called as child insurance. Now what do we understand by child insurance? Now all parents think about the future of their children. तो चाइल्ड के फ्यूचर के लिए जो पैसा जमा करना होता है that could be done with the help of child insurance. So when a child is small, start paying the premium regularly. And when your child will be major, 18 साल, 20 साल या after a specific period of time, शायद उसके एजुकेशन के लिए खर्चा हो सकता है, तो वो चाइल्ड को एक ह्यूज अमाउंट मिलेगा. That is called as child insurance. Then moving to the next one is called as retirement plans. Retirement plans basically are those plans which will help you at the time of your retirement or to live the life after retirement. So till you are retiring, जब तक आपका जॉब चालू है, आप जब तक काम कर रहे हो तब तक प्रीमियम भरते रहो और जैसे आप रिटायर होते हो एक लमसम अमाउंट जमा होता है और वो आपको एज अ पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट प्लान्स. And last but not the least is called as ULIP.
ओके, इट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब आप जो प्रीमियम भरते हो वो प्रीमियम स्टॉक मार्केट्स में लगाया जाता है, and the value of your policy will fluctuate according to the performance of the stock markets. So these were the different types of life insurance policies. The next type of insurance is called as marine insurance. And marine insurance is specifically used when the goods are transported through water transport. So when the goods are being transported using some water bodies, there are some risks involved. They are also referred to as the perils of the sea. Perils of the sea मतलब शिप डूब सकता है, सुनामीज आ सकता है, शिप में आग लग सकती है, या फिर पायरेट्स आपके शिप लूट के लेके जा सकते हैं. All such type of risks are covered under marine insurance. सो मरीन इंश्योरेंस में आपको आपके गुड्स का प्रोटेक्शन मिलेगा. अगर आप शिप के मालिक हो तो शिप का भी आपको लॉस का कॉम्पेंसेशन मिलेगा. सो मरीन इंश्योरेंस गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू डेंजर्स ऑफ द सी. So your ship can be insured, the cargo in the ship can be insured, and also the people working on the ship will be covered under such type of marine insurance policy. Now guys, let's try to understand what are the different types of marine insurance policies. The first one in this is called as a voyage policy. अब voyage का मतलब होता है journey. So, a voyage policy is specifically for one particular journey. वो जर्नी को आपको डिफाइन करना है, आप कहां से कहां तक जाओगे या वहां से वापस आओगे, जो भी है. तो दैट वन जर्नी विल बी इंश्योर्ड. उसमें अगर सब्जेक्ट मैटर को कुछ नुकसान हुआ, देन दैट विल बी कॉम्पेंसेटेड. सो वॉयज पॉलिसी हियर, द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक जर्नी और फॉर अ स्पेसिफिक वॉयज, नो मैटर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड. बस आपका जर्नी चालू होकर खत्म होने तक आपका इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन रहेगा. Moving to the next one is called as time policy. Now in time policy it is taken for a specific period of time, और वो टाइम लिमिट में आप जितने चाहिए उतने जर्नीज कर लो. All these journeys will be covered. So time policy is taken for a specific time period. The third one is called as mixed policy. The mixed policy basically is a combination of voyage and time. मतलब in a given period of time वो specific journey आपको complete करना है, और किसी वजह से अगर वो specific journey complete नहीं होता है तो आप extension ले सकते हो. That is called as a mixed policy. Moving to the next one is called as valued policy. अब बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ गुड्स का मार्केट वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो बोथ द पार्टीज बैठ के मिलके डिसाइड करते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, और वो वैल्यू के लिए इंश्योरेंस खरीदा जाता है. सो हियर द गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर अ एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड. Moving to the next one is called as a blanket policy. Now blanket policy means multiple properties can be insured under one common policy. अब आपका जो गुड्स है वो अलग अलग शिप से जा रहा है, तो वो सब गुड्स का इंश्योरेंस एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी में आप निकाल सकते हो, एंड दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज अ ब्लैंकेट पॉलिसी. Moving to the next one is called as the port risk policy. Port risk policy मतलब if a ship is stationed at a particular port, और पोर्ट में रुकते वक्त अगर शिप के साथ कुछ हादसा हो गया, गुड्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो और लॉस होता है, तो ये लॉस को कॉम्पेंसेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोर्ट रिस्क पॉलिसी. Moving to the next one is called as composite policy. Composite policy का मतलब होता है the goods or maybe the ship is so costly, yeah, the insurance amount is so huge that one insurance company cannot compensate the loss alone.
Under such circumstances, multiple insurance companies come together and insure a specific ship or the goods. Such a policy, which is taken from more than one insurance company, is called as Composite Policy. Moving to the next one is called as Single Vessel Policy. सिंगल वेसल पॉलिसी एकदम सिंपल है। छोटे से शिप के लिए जब उसका एक मालिक होता है और वो एक मालिक को सिर्फ एक ही शिप के लिए अगर पॉलिसी निकालना है, इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल वेसल पॉलिसी. Moving to the next one is called as fleet policy, which is basically the extension of blanket policy. Fleet policy मतलब there is a shipping company और शिपिंग कंपनी के पास अपने बहुत सारे शिप्स हैं, तो अलग अलग शिप का अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने का कोई जरूरत नहीं है. यू कैन बाय ओनली वन सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर एंटायर फ्लीट फॉर ऑल योर शिप्स. Such a policy is called as fleet policy. So in fleet policy, several ships belonging to one owner are insured under the same policy. And all types of cargo can also be insured for all modes of transport. That was called as the fleet policy. So with this, guys, we have finished off with the different types of marine insurance policies. The next and the last type of policies are called as fire insurance policies. तो सबसे पहला तो ये देखते हैं व्हाट इज फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस मतलब अगर आग लगने से अगर आपके गुड्स को नुकसान होता है, then that losses will be compensated by the insurance company, and such a type of insurance is called as fire insurance. So fire insurance is a contract where the insurer undertakes to indemnify, मतलब वो गारंटी देता है, undertakes to indemnify the insured against loss to property by fire. मतलब फायर इंश्योरेंस कंपनीज जो होते हैं वो आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपका प्रॉपर्टी आग से जल गया तो उससे आपको जो भी नुकसान होगा वो नुकसान हम भरेंगे. हम भरेंगे मतलब इंश्योरेंस कंपनी भरेगा. That contract, that agreement is called as fire insurance. Now, let's try to understand the different types of fire insurance policy. The first one in this is called as the valued policy. Now, valued policy means बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे कुछ goods होते हैं, products होते हैं कि जिसका market value निकालना बहुत मुश्किल होता है. Okay, a piece of art, sculpture, मूर्ति, painting, इसका market value पता नहीं है क्या है. So the insured and the insurer दोनों मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे कि what will be the value of this particular thing, and in the event of fire उतना पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा. So in valued policy, the value of the subject matter of insurance is agreed upon at the time of making the contract, and that is done between the insurer and the insured. Moving to the next one is called as average policy. Average policy वो होता है जिसमें average clause use होता है. Now you ask me what is this average clause? Suppose you are under insuring. That means 10 लाख का गुड्स है और आपने सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस निकाला. तो जब नुकसान होता है तो आपको पूरा नुकसान का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. 10 लाख का गुड्स, 5 लाख का इंश्योरेंस, मतलब 50% लेस आपने इंश्योरेंस करवाया. तो अगर आपका नुकसान 4 लाख हुआ है तो आपको पूरा 4 लाख नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 लाख मिलेगा. दैट इज द एवरेज क्लॉज. 50% लेस for the value, so 50% less of the compensation also. That is called as average policy. Moving to the next one is called as specific policy. So in specific policy, the policy is insured for a definite sum irrespective of the market value. यहाँ पे market value consider ही नहीं करते. यहाँ पे पहले से decide होता है कि what should be the sum assured, and at the event of some undesirable event or loss, the full compensation is being made. Moving to the next one is called as floating policy. Now, when the goods are stored at different location or at different godowns, तो हर एक का अलग अलग पॉलिसी निकालने का जरूरत नहीं है. You can buy only one single policy, that is called as floating policy. जैसा हम लोगों ने ब्लैंकेट पॉलिसी पढ़ा था मरीन इंश्योरेंस में,
ठीक वैसा ही होता है यहाँ पे. It is called as the floating policy. Moving to the next one is called as excess policy. Now, excess policy is taken in those circumstances जहाँ पे value of the stock fluctuates too much. स्टॉक का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो यू कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू एट द टाइम ऑफ द फायर. तो जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है, ओके, वो रेंज के लिए एक एक्स्ट्रा पॉलिसी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेस पॉलिसी. Moving to the next one is called as reinstatement policy. Reinstatement policy में आपको कोई compensation नहीं मिलता, फिर आपको आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वही रिप्लेस करके नया दिया जाता है. So, reinstatement policy is that where the insurer undertakes to replace the property or goods which are lost by fire. तो यहाँ पे आपको compensation नहीं मिलेगा, आपको आपके goods नए मिल जाएंगे. Then, moving to the next one is called as consequential loss policy. Now, what exactly is this consequential loss policy? अब normally traditional insurance में क्या होता है, जो गुड्स जल जाते हैं उसका आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, लेकिन गुड्स जलने के वजह से और जो भी कुछ कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस हुए हैं वो भी लॉस आपको भर के मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी. I missed one, that was called as the comprehensive policy. अब comprehensive policy मतलब it covers all different types of risk. मतलब loss could be by fire, it could be due to riots, it could be due to floods. So all such type of risks are covered under one common policy that is called as a comprehensive policy. And then the last one is called as sprinkler leakage policy. अब जहां पे आग लगने का चांसेस होता है वहां पे हम पहले से ही स्प्रिंकलर सिस्टम्स बिठाते हैं ताकि अगर आग लगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर चालू हो, सब जगह पे शावर्स चालू हो और आग काबू में आ जाए. बट मेनी अ टाइम्स दीज स्प्रिंकलर्स कैन माल फंक्शन. मतलब आग लगानी है लेकिन फिर भी वो स्प्रिंकलर चालू हो गया, पानी डाल दिया उसने और अपना गुड्स भीग गया, नुकसान हो गया. Such a type of losses can be recovered or compensated with the help of sprinkler leakage policy. So it covers the damage caused to property by an automatic sprinkler system causes a leakage. So my dear students, these were nothing but different types of fire insurance policies, and also I finished off with a business service that is called as insurance. The next business service that we are learning is called as warehouse service or warehousing. Warehousing is nothing but storage of the goods. अब ये goods को store क्यों करना है? क्योंकि there is a time gap between production and consumption. And in this time gap, we need to protect the goods, we need to preserve the quality of the goods. And both these things can be done in a warehouse. So warehouse refers to storage of the goods and consists of all those activities which are connected with storage and preservation of the goods. Okay guys, so now let's try to understand what are the different functions of a warehouse. Warehouse क्या क्या करता है? सबसे पहला, it provides a storage space. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि गुड्स जब बनता है इमीडिएटली बिकता नहीं है, देयर इज अ टाइम गैप. गुड्स बनने के बाद थोड़े टाइम के बाद, मतलब डिमांड आने के बाद गुड्स को सप्लाई किया जाता है. देन तब तक वेयर एग्जैक्टली दिस गुड्स विल बी केप्ट, वेयर इट विल बी स्टोर्ड, and it will be stored in a warehouse. So warehouse basically provides the storage facility of the goods where two things happen. One, the goods are protected from theft, damage, fire, water, and so on. And also the quality of the goods will be preserved. Okay guys, moving to the next one is called as price stability. Now, with the help of warehousing, the prices of the goods can be stabilized. मतलब अगर goods का shortage हो जाए तो price बहुत ही बढ़ेगा, which is not good for everyone.
So, warehousing, what exactly it does is it stores the goods. जैसे ही प्रोडक्शन होता है उसको अच्छे से स्टोर करके रखेंगे और जो भी एरिया में डिमांड बढ़ जाता है इमीडिएटली हम उस एरिया में गुड्स को सप्लाई कर देंगे एंड दैट्स हाउ वी विल बी एबल टू कंट्रोल द प्राइसेस. दैट इज कॉल्ड एज प्राइस स्टेबिलिटी. Then moving to the next point is called as risk bearing. Now there is always a risk associated with storage. Goods जब store होते हैं तो उसका चोरी हो सकता है, चूहा उसको खा सकता है, उसके बाद आग लग सकती है, बहुत बारिश की वजह से पानी भर सकता है. So all such type of risks are associated with the storage. So warehousing has to undertake all this risk. It has to bear all these risks. Okay guys, moving to the next one is called as financing. Now warehousing helps you in financing. Now guys, when businessman needs loan, okay, they have to give something as security. तो एज अ सिक्योरिटी वो क्या दे सकते हैं? तो आपके गोडाउन में जो गुड्स पड़ा है, ओके, उसको आप एज अ सिक्योरिटी रख सकते हो. ओके, सो इन शॉर्ट वेयरहाउसिंग फैसिलिटेट्स फाइनेंसिंग. वेयरहाउस में जो गुड्स होता है उससे आपको फाइनेंस मिल सकता है. देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग एंड पैकिंग. So grading basically is division of the goods after physical inspection. बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हमको डिवाइड करना पड़ता है इनटू ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी. तो वो डिवीजन करने के लिए जगह तो होना चाहिए एंड दैट जगह, दैट प्लेस वेयर पीपल विल सिट एंड डिवाइड द गुड्स बेस्ड ऑन क्वालिटी इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग. And grading is done inside a warehouse. Then goods are demanded by different retailers in different quantities. So in appropriate quantity का जो packing होना है, that is referred to as packing. So for packing also we need some space and that space is nothing but your warehouse. Then warehouse facilitates transportation. So transportation basically is movement of goods from one place to another. But if the goods are in very small quantity, then the transportation will be costlier. तो वेयरहाउसिंग में हम गुड्स को पहले से अच्छे से स्टोर करके रखते हैं एंड देन ट्रांसपोर्टेशन को हम फुलेस्ट कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं. सो वेयरहाउसिंग फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्टेशन. Moving to the next one, a very basic point, it creates time and place utility. Guys, I have already said that there is a time gap between production and consumption. In this meantime, the goods has to be stored properly. The quality of the goods has to be preserved and that is done by warehousing. So, warehousing creates time utility. And it also creates place utility. जैसे जहां पे भी गुड्स का जरूरत पड़ेगा वहां पे हम गुड्स को भेज देगा through that warehouse. So warehousing also creates place utility. And then the last one is called as processing. Now what do you understand by this term processing? Processing means some type of processing like assembling of the goods, standardization of the goods is required to be done. And again, this processing of the goods can be done using a warehouse, could be done inside a warehouse. So my dear students, these were nothing but different functions of a warehouse. Moving to the next one is called as what are the different types of warehouse. Warehouse कौन सा type का होता है? The first one in this is called as a private warehouse. A private warehouse is owned by big manufacturers or producers or by big businessmen. So big businessmen always have huge quantities of goods with them. Maybe the finished goods, maybe the raw materials. तो businessmen को जो goods लगता है, खरीदते हैं या बेचने के लिए, उनको अगर store करना है, तो that will be stored in their own godown, which is owned by them. They are referred to as private warehouses. Moving to the next one is called as public warehouse. Public warehouse is used by the general public. अब छोटे-छोटे businessmen होते हैं, okay? They need to store their goods for some period of time. Now they are not that big that they can construct their own warehouse. So they rent some space in a public warehouse. तो वो जितना जगह use करते हैं उतना उनको rent देना पड़ता है. And many a times this public warehouses is owned by the government itself. Okay, moving to the next one is called as a bonded warehouse. Now, bonded warehouse is associated with import trade.
तो जब बिजनेसमैन किसी फॉरेन कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भरना होता है। अब उसको इंपोर्ट ड्यूटी भरने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी है, तब तक वो गुड्स को कहां पे रखेगा? शिप तो गुड्स छोड़ के चला गया। Now where the goods will be stored? So here the goods will be stored in bonded warehouses. And this exactly is the warehouse of the government. तो जब तक आप आपका import duty clear करें, तब तक these goods will be stored in a bonded warehouse. So bonded warehouses are licensed by the government to accept imported goods for storage. कब तक? Until payment of the custom duty. Then moving to the next one is called as duty paid warehouse. अब हमने ड्यूटी भर दिया तो बॉन्डेड वेयरहाउस में से गुड्स को लेके जाने का आपको परमिशन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही तैयार नहीं है। बॉन्डेड वेयरहाउस के बाहर गुड्स तो आ गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट अभी तक आया नहीं है, तब तक ये गुड्स को कहां पे रखे? तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस। सो ड्यूटी पेड वेयरहाउस मतलब ये गुड्स के ऊपर का इंपोर्ट ड्यूटी हम भर चुके हैं। अब हमारा कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ टाइम है गुड्स लेके जाने के लिए, तब तक ये गुड्स को स्टोर करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस। सो द गुड्स आर स्टोर्ड हियर आफ्टर पेइंग ड्यूटी व्हेन द इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम्स व्हिच मे बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट वेयरहाउस। सो ऑल दोज वेयरहाउसेस व्हिच आर ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट वेयरहाउस। अब गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे वेयरहाउसेस को सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, हाईवेज उसके नजदीक कंस्ट्रक्ट करती है। सो इन ट्रांसपोर्टेशन व्हेन द गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड, maybe for a switch over, then we will be using a government warehouse. Okay, moving to the next one is called as cooperative warehouses. Now cooperative warehouse is nothing but it is owned by a cooperative society. Cooperative society is basically association of few people together and they will come together to help each other. तो कुछ लोग जब साथ में आके अपना खुद का वेयरहाउस बनाते हैं जहां पे वो लोग अपना गुड्स को स्टोर करेंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन दे आर रेफर्ड टू एज कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस। सो दीज आर द वेयरहाउसेस ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय एंड मैनेज्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हमेशा एक मोटो है कि दे डोंट वांट टू अर्न प्रॉफिट, दे जस्ट वांट टू गिव सर्विस टू देयर मेंबर्स एंड दैट्स व्हाई दे कैन प्रोवाइड वेयरहाउस फैसिलिटी एट द मोस्ट इकोनॉमिकल रेट्स। एकदम सस्ते में आपको वेयरहाउसिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। And then the last one is called as cold storage warehouse. Now there are some goods which are required to be stored in cold storage and the best example is ice cream. आइसक्रीम को अगर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेंगे तो पिघल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। So the warehouses which are used for storing perishable commodities like fruits, vegetables, dairy products and ice creams is called as cold storage warehouse. So with this guys we have finished off with different types of warehouses. I've also finished off with a business service called warehousing and we have also finished off with this chapter called as business services.